Hanji, good morning class. Hope so you all are good. I think I so or watch all the video. You all are good, fit and fine at home. Okay, Razi. Today we are going to start a new chapter of biology. That is life processes. The first chapter of biology, that is life processes, or you can say basic chapter. That is related with our body organs, functions of our body organs, general knowledge about our body, or you can say humans. It is very interesting chapter. Okay, so let's start. First is could you understand by life process? I said we are going to study about the life processes. Firstly, what are life processes? How we define word life processes. Life processes are the basic processes in the living organisms which are necessary for maintaining their life. The basic life processes, that meaning that so we are living. The basic, or you can say the necessary life processes that help in maintaining our life, that help in the survival of our life. We call them life processes. Examples of the life processes, or you can say the processes that helps in maintaining our life: nutrition, excretion, respiration, circulation. These all are the life processes. Okay, Raze, firstly what is जो मैंने examples दिए हैं, I want to define them. What is nutrition? What do you understand by nutrition? Nutrition is a process in which we intake food and utilize that food for doing various activities in our body. We intake food and utilize that food for doing various activities in our body, or you can say for doing various life processes. Second is respiration. Respiration is the process by which food is one, or you can say food is oxidized in the body cells to release energy. What is respiration, Raze? Respiration meaning oxidation of the food for releasing energy. Third process, that is transportation. Transportation meaning क्या है? The process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ट्रांसपोर्ट मीनिंग एसएसटी में आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना डिटेल में, मीनिंग कैरी एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बट इन केस ऑफ बॉडी वट वी कैरी फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, वाटर, गैसेज, ऑल दीज थिंग्स. ओके. Excretion. Excretion meaning is the process by which waste products are removed from the body. Meaning excretion is a special or typical process in which the waste product that are not digested in our body, we release that waste product, or you can say we remove that waste product from our body by the process excretion. Okay, so we will study in this chapter in detail about nutrition, respiration, transportation and excretion. तो जस्ट मैंने डेफिनेशन दी है, बट न्यूट्रिशन की आगे पूरी की पूरी डिटेल, हाउ इट इज टेक्स प्लेस, व्हाट ऑर्गन्स हेल्प इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस है ना, डिटेल ऑफ द रेस्पिरेशन वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, फर्स्टली दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, मीनिंग human digestive system. All the organs that compose or that consist of the digestive system, we will study about the functioning of all the organisms, how food is digested, in which organ, which component of the food is digested. We will study about all the things. Okay, same in case of the respiratory system. This is human respiratory system, a level diagram of human respiratory system. We will study about the working of lungs, and you know lungs are the main, or you can say basic organs of human respiratory system. Okay, third, that is your circulatory system, meaning how human help in the transportation of gases, exchange of gases takes place, how blood, oxygenated, deoxygenated blood is circulated in our body. We will study in the detail, don't get confused. Okay, next, the last, that is excretory system. Kidneys are visible, meaning kidneys meaning main excretory organ of our body that helps in the removal of the waste product. So in this chapter we will study in detail all these processes. In 7th class also we study about the digestive system, respiratory system and circulatory system and also excretory system, but in little bit
detail. But in this class we will study all these things in more detail, and you will enjoy this chapter because this is related with our body. You understand how the activities takes place in your body. You will understand everything. Okay, Raze? Okay, so firstly we are going to start the topic nutrition. हाँ जी, न्यूट्रिशन डेफिनेशन. अभी हमने क्या की थी, डेफिनेशन ही तो की थी. व्हाट इज न्यूट्रिशन? Intake of the food, or you can say nutrition is the process. Whenever we have to define something, we just define it in some you can say productive way. Okay, nutrition is the process of taking food via an organism and its utilization by the body to build body for growth, to repair damaged parts of the body, and for the energy. In conclusion, I can say nutrition is the process of taking food via an organism and the utilization of that food for doing various metabolic activities. So what are the metabolic activities? All are the metabolic activities ना हम ग्रो कर रहे हैं. आप अब जो 10th क्लास है जो मेरे पास, आई थिंक दिस क्लास as I am teaching this class from the 7th class. Okay, you grow. Okay, as compared to 7th section, 7th class, your 7th class, you grow now, है ना, meaning growth of the body, repair of the damaged parts. All these things are the metabolic process that need energy, or you can say for that we intake food, and the whole the process is by which we intake food and utilize, meaning किसी चीज को use करना, utilize that food for doing various metabolic activities. You can also write these terms for building body, for growth, for repair. You can write, no issue. Okay, we call it nutrition. कहते हैं लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, एंड द मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. जो कार्बन पूरी ही जो हमारी केमिस्ट्री है ना, उसका जो कार्बन है हमारे पास, वो क्या है, हर एक जगह पे क्या इंक्लूड हो रहा है. हमारी पूरी की पूरी लाइफ बेस कर रही है किस चीज़ पे, कार्बन पे, कार्बन मॉलिक्यूल्स पे. ओके रजे, दैन फूड के कंपोनेंट्स भी मोस्टली क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, कार्बन कर रहे हैं. ओके रजे, फर्स्टली अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन टर्म क्लियर है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और यू कैन से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. वी ऑल नो दैट so many animals, so many living organisms are present on the earth, and this is the basic characteristic of living organisms. All the living organisms intake food, they use food for obtaining energy. Okay, then different organs, different animals eat different type of the food in different way. Different organisms have a different digestive system, different type of the system in their body. Amoeba has a different, because it is single celled organism, it has a different system in its body for the nutrition. And humans have different system, birds have different system, lion has a different system, owl has a different system. You can say, meaning every organism, or you can say every animal have a different type of the you can say different types of the nutrition system or digestive systems, as well as they eat different type of the food. That's why different type of the digestive system is present in every organism. Okay, Razi. Then on that basis we classify some types of the nutrition, meaning which type of organisms take which type of the food and what method they use. Okay, we will study. तो first क्या है, we classify it into two types. Basically जो हमारी basic classification है types of nutrition की, that is of two types. The first one is autotrophic. First one is autotrophic, and the second one is the heterotrophic. Second one is heterotrophic. जैसे बहुत बार हमने जब डीजे क्लास में किया है, इन 7th class also, and on Zoom classes also. Auto meaning self. बायो में कहीं पे भी, बायो में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग कभी चेंज नहीं होते. ऑटो वर्ड कहीं पे भी एज ए डेट मीनिंग सेल्फ. ओके रजे, देन सेल्फ. ऑटोट्रॉपिक मीनिंग क्या है, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms prepare their own food. They can prepare their own food by themselves by using some simple inorganic substances like carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll. Meaning auto meaning क्या है, सबसे सिंपल सी बात है, जब आपको जी क्लियर होगा ना, auto meaning सेल्फ है, तो क्लियर है. ट्रॉपिक क्या है, the process of the formation of the food. Meaning autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms can make their own food by using simple inorganic substances, or you can say by using raw materials like carbon dioxide, water,
what? In the presence of sunlight and chlorophyll. Let's say what is the function of chlorophyll? In cell chapter in 9th class we study about chloroplast and chlorophyll. Okay, let's say chlorophyll meaning it capture the sunlight for the formation of the food, or you can say for the photosynthesis process. We will study about the photosynthesis in next slides. Okay, let's say the example of this type of nutrition, all green plants, because green plants have chlorophyll, so all the green plants perform autotrophic nutrition, and some bacteria also. Okay, let's say the second type of the nutrition is the heterotrophic nutrition. Let's say heterotrophic nutrition meaning there are three main types. Heterotrophic meaning, simply firstly I want to clear heterotrophic word. Heterotrophic meaning the type of nutrition in which organisms cannot make their own food. They depend upon others for their food requirements. They depend upon others for their food requirements. We call this type of nutrition heterotrophic nutrition. Okay, that's it. Heterotrophic nutrition further divided into various types. बहुत सारे हमने क्या कहा, जस्ट ग्रीन प्लांट्स क्या ऑटोट्रॉपिक है, तो मीनिंग बाकी पेंडिंग के सारे एनिमल्स क्या हैं, जैसे हेटरोट्रॉपिक ना। देन हाउ वी आइडेंटिफाई, अब हेटरोट्रॉपिक में तो इतना बड़ा हम कह सकते हैं कि आपके पास इतनी अमाउंट आ गई भाई, गेट कंफ्यूज। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, हेटरोट्रॉपिक को फर्दर डिवाइड कर दिया ताकि आप क्या आइडेंटिफाई कर सके, आपको क्या है कन्फ्यूज़न ना हो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को और इतने सारे एनिमल्स को देखकर, क्योंकि आपके लिए सोचना पड़ता है ना कि बच्चे कन्फ्यूज हो गए तो उन्होंने आगे कुछ करना ही नहीं है। तो क्या है, उनको हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या है डिवाइड कर दिया, न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक में, पैरासिटिक में एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। Okay, so now we are going to study about these types of the nutrition. And the first is saprotropic nutrition. Saprotropic meaning that depend upon the dead and decaying matter. It is a type of the nutrition in which organisms get food from dead and decaying organisms. They break down the food material outside their body and then absorb it. Meaning overall all the organisms that directly depend upon the dead and decaying matter for their food requirements, like mushroom तो सभी ने देखी होगी ना। दिस इज मशरूम, मोस्टली जो हमारा थोड़ा कुछ लोग इसे एज अ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। मशरूम सभी ने सुनी होगी, देखी होगी, बहुत कॉमन एग्जांपल है मशरूम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड कई बार हम मॉइस्चर में रख देते हैं तो उसमें क्या है एक फंगी ग्रो हो जाती है ना, डेट इज़ ब्रेड मोल्ड। ओके, ईस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे पैरासिटिक मीनिंग क्या होता है, देयर इज वन होस्ट एंड द वन इज पैरासाइट। होस्ट मीनिंग, होस्ट क्या होता है, किसी के घर पे मैरिज होती है तो जिसके घर पे मैरिज होती है, कोई फंक्शन होता है, जो उस चीज़ को अरेंज कर रहा है, जिसके वो घर पे है, डैट मीनिंग वो क्या होता है, होस्ट होता है। सेम ही इधर होता है। तो क्या है, होस्ट क्या होता है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी पे क्या है, या तो बॉडी के इनसाइड या तो आउटसाइड कोई और बाहर से बंदा आकर के आए, कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आकर के आए, अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। मीनिंग यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच an organism get their food from the other living organism by staying in and outside their body. That we call that living organism को आप क्या बोलेंगे, जिसकी बॉडी पे रह रहा है, होस्ट। और यू कैन सिंपली यूज टर्म होस्ट ऑल्सो। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग दैम। फॉर एग्जाम्पल कस्कूटा मीनिंग अमरवेल। आप सभी को पता है कि अमरवेल क्या ऑलवेज क्या है, जो ट्री की हेल्प से ही क्या है ग्रो करती है। और आप और एग्जाम्पल ले लो, लाइस ले लो, राउंड वॉर्म ले लो, टेप बॉम ले लो, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है राउंड बॉम, है ना। प्लाज्मोडियम ले लो, मलेरिया का जो पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम फर्स्टली क्या है, मॉस्किटो की गट में क्या है सर्वाइव करता है। आफ्टर डैट क्या है, जो हमारी बॉडी में जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है तो बॉडी में एंटर हो जाता है। मीनिंग क्या है, होस्ट इनडायरेक्टली क्या है अपना फूड क्या है होस्ट से ले रहा है, आइदर वो मॉस्किटो था, फीमेल एनोफिलीज, आइदर क्या है ह्यूमन है। नेक्स्ट वजह क्या है, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, डेट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टोपैरासिटिक, सेकंड इज एंडोपैरासिटिक। जैसे एक्टो मीनिंग द ऑर्गेनिज्म, एंडो वर्ड बायो में कहीं पे भी आ जाए, मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बायो में जिनका मीनिंग चेंज नहीं होता। एंडो वर्ड किसी चीज़ के लिए भी यूज़ करेंगे, डेट मीनिंग इनसाइड, किस चीज़ का आपको इशारा करेगा, इनसाइड का।
तो मीनिंग ectoparasitic nutrition meaning in which organism live outside the body of host. एंडो मीनिंग लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, लाइक प्लाज्मोडियम क्या है हमारे पास, एंडो पैरासिटिक हो गया. और आप एग्जांपल ले लो, लीच की एग्जांपल ले लो. लीच क्या है हमारे पास, एक्टोपैरासिटिक है. क्रो क्या है, जैसे बफेलो की बॉडी से क्या है फूड ले रहा है, डेट इज ऑल्सो एक्टोपैरासिटिक. मीनिंग देयर आर सो मेनी. कस्कुटा इज ऑल्सो एक्टोपैरासिटिक. ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं थर्ड टाइप क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन. थर्ड टाइप क्या है, होलोबॉड मीनिंग पूरे का पूरा, कंप्लीटली सॉलिड, कोई चीज़ सॉलिड है हमारे पास. कहते हैं इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली then digest and absorb it, meaning where the proper digestion process starts. Firstly intake of the food, after that digestion of that food, after that absorption of that food and assimilation plus egestion. meaning digestive process जो हमारा digestion का process है उसके 5 के 5 steps हो रहे हैं. complete food लेने के बाद उस पर सारे का सारा process digestion हो रहा है. we call that holozoic nutrition, or you can say the organisms that take food directly and then digest it. ओके, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन, बर्ड, फिश, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जितने पेंडिंग रह गए एग्जाम्पल्स की, यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल. ह्यूमन कॉमन एग्जाम्पल है, अमीबा इज ऑल्सो कॉमन एग्जाम्पल, पैरामीशियम इज ऑल्सो, यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल. ओके, सो दीज आर द टाइप्स और यू कैन से मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन. अब सेकेंड हमारा जो टॉपिक है डेट इज, अभी तक हमने जो स्टडी किया जनरली किसके रिगार्डिंग किया, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग किया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो न्यूट्रिशन है कोई भी रजे हमारा इसमें से लाइफ प्रोसेस है, आइदर वो न्यूट्रिशन है, आइदर वो क्या है हमारे पास रेस्पिरेशन है, आइदर वो हमारे पास क्या है सर्कुलेशन है. वी विल स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन animals. okay, especially in humans. in animals meaning we will study detail in humans. Okay, so from in next class we will start nutrition in the plants. Okay, for today I think so you understood all the topic. Thank you.